Hello students, in this video let us look at the next theorem after basic proportionality theorem, which is called angle bisector theorem. So what does this theorem say? This theorem says that the angle bisectors of an angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of the sides containing the angle. So when you read it in English, it looks quite complicated, but mathematically what it says is, if you have a triangle, मान लीजिए angle A का angle bisector is AD. What is the meaning of angle bisector? This line divides the angle into two equal halves. इसका मतलब इस तरफ angle alpha है तो इस तरफ भी angle alpha है. Okay. So the line which divides the angle into two equal halves is called the angle bisector. आपको पता है हर एक triangle में correspond to every vertex. You have an internal angle, you have an external angle. अगर internal angle को half ऑफ किया तो वो internal angle bisector होगा. External angle भी है देखिए. So इस external angle को half ऑफ किया तो उसको हम external angle bisector बोलते हैं. Clear? So the internal bisectors of an angle of a triangle, which is AD, divides the opposite side BC को AD दो parts में divide कर रहे हैं BD and DC. बोल रहे हैं कि ये दोनों का रेशियो जो है, the ratio is equal to the ratio of the sides containing the angle. इसका मतलब है देखिए इस थ्योरम में the given thing is AD is the angle bisector of angle BAC of a triangle. इसका मतलब है angle BAD is same as angle CAD. वही है ना मतलब? The meaning is just that this angle is same as this angle. That is given. What is to be proved? To be proved is BD by DC, the ratio in which AD divides BC, is equal to the ratio of the sides containing the angle. This angle is contained by AB and AC. So AB by AC. This is what you need to prove. AC by AB नहीं है क्योंकि BD जो है AB के साइड तरफ. DC is towards AC. So BD by DC is equal to AB by AC. So that's the theorem. Clear है? So इसको prove करने से पहले let us take a construction. Let's take a construction. The construction is simply through C, through vertex C, draw a line parallel to AD. From C, draw a line parallel to AD. AD जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए थ्रू C. ओके, थ्रू C ड्रॉ ए लाइन, यह है ना. सो थ्रू C ड्रॉ ए लाइन विच इज पैरेलल टू AD. टू कट BA extended at E. BA को extend कर लीजिए. It cuts this line at a point E. So this is the construction. Now, if you do this construction, if you understand this construction, let us go to the proof. Proof बहुत simple है. So first block में देखिए क्या करना है. So AD is parallel to C in triangle CBE. अब कौन सा ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए? बड़ा ट्रायंगल कंसिडर कर लीजिए. CBE ट्रायंगल में DA is parallel to AC. This implies from BPT. BPT के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं? BD
by DC is equal to AB by AE बोल सकते हैं. Just for the time being, forget about this AC. इसको भूल जाइए. Just forget about this AC. In this big triangle, these two are parallel to each other. So this by this is equal to this by this. Clear? This is my first statement. Next देखिए, first block हो गया. First block is a statement using basic proportionality theorem, BPT. Next देखिए, आधा थ्योरम तो प्रूफ हो गया. देखिए जो टू बी प्रूव्ड है और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बहुत ही नजदीक है. देखिए BD by DC, BD by DC, AB by AE, AB by AC. These three terms are same. आपको सिंपली ये प्रूव करना है कि AE and AC are same. You have to prove that AE is same as AC. एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल कैसे प्रूव करते हैं लॉजिकली? उसका ऑपोजिट एंगल से इक्वल प्रूव करना है. So now what we are trying to do is to prove that this angle is same as this angle. अब ब्लॉक 2 में क्या करने वाला है वो भी पहले समझिए. मैं ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल प्रूव करने वाला. कैसे प्रूव करें वो आप सोचना पड़ेगा. सो देखिए, फर्स्ट DA is parallel to CE. DA is parallel to CE. And AC can be thought of as a transversal. And AC is the transversal. जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होगा. सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल BAD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग है, इज इक्वल टू एंगल AEC. And this angle and this angle are corresponding. Angle CAD is equal to angle ACE. These are corresponding angles. These are alternate interior angles, AIA, alternate interior angles. But BAD and CAD are equal according to the given theorem. But angle BAD is same as angle CAD, which implies angle AEC is same as angle ACE. So, in triangle ACE, opposite two angles are equal, hence the opposite sides are equal. So, in triangle ACE, AE is equal to AC. होना चाहिए. ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव कर लिया हमने. सो दीज टू साइड्स शुड बी इक्वल, विच इम्प्लाइज यहाँ AE के प्लेस में आप AC पुट कर सकते हैं. सो BD by DC is equal to AB by AC. Hence proved. So this theorem is called angle bisector theorem, corresponding to the internal angle bisectors. Exactly यही theorem आप external angle bisectors के लिए भी कर सकते हैं, which we'll do now. So now you have understood what is called internal angle bisector theorem. Next we'll go into external angle bisector